Hi. When I say that life comes back to you in a full circle, how many of you believe that? I actually did not believe it previously, but of late I started believing that. Life comes back to you in a full circle is equal to your karma comes back to you, the way you treat others or the way you behave with others. It some way or the other takes a full circle and comes back to you. So, I want to share an anecdote which has taken place to me in the year 2007. Yes, and karmic equations have come back to it day before yesterday. तो हुआ ये था, I was newly married to Mr. Biswas, and I got shifted completely to myself at Bombay. And he used to work at Taj. He was an executive over there at Taj Bombay, and I was um, a budding doctor. I used to practice at St. George Government Hospital, Bombay. Okay, so in that year, मैं मेरी नई नई शादी हुई थी. So my first disclaimer is this video is going to be a little big because it's a whole experience of my own life, so little big, so bear with me. Listen to this very patiently. Okay, so मिस्टर बिस्वास का एक नोन था बंदा जो कि उसके चाइल्डहुड में गुवाहाटी में उसके उनका नेबर था. एंड दे वर लाइक उनके नेबर में ही रहते थे, तो ही यूज टू कॉल हिम भैया, दादा, वट एवर. ओके, दे वर ऑल्सो बंगालीज. हिज नेम वॉज देवराज. सो he helped him get a job at Taj. I mean, Mr. Biswas helped him get a job at Taj. So he had no place to stay. So Mr. Biswas asked him that his Bombay flat was big enough. So he said, you can stay at our home. So he used to stay. So Mr. Viswas used to go to his workplace like somewhere around 8 o'clock, and I used to go somewhere around like 12, sometimes 1 or something. Okay, so I was there at home lonely, and I got newly married, and I was there in the kitchen, and वो पीछे से आया and he grabbed me from the back. Okay, he was not Mr. Biswas is not his original brother or cousin brother. No, they knew each other from their childhood, and their parents knew each other because they used to stay in the same colony, same locality. So he used to call him Dada, and my husband used to treat him, his sister, more than like family. Okay, so he for him I was a bhabhi. Okay, and I was cooking. I think I was cooking, or I was preparing some chai for myself or some Maggie. I don't remember exactly. And he straight away came to me like from the back. I couldn't even get the sound of who is coming, and Peaches say he just grabbed me up. Okay, and I was like, I was pushing him and all, and there was nobody in the flat, and I was so scared because it was not very much long time that I had been at Bombay, so I didn't know much of the people, and phone and WhatsApp was not there at that time. There were QWERTY phones, and phone calls were not very prevalent or something like that. Okay, so he just came and grabbed me up, and then I cried a lot, and I pushed him, and he was so strong. He strongly held me from the back. I was very shattered. मैं किसी तरीके से छुड़वा के अपने बेडरूम में भागी. आई केम इन साइड माई बेडरूम, आई लॉक्ड माई सेल्फ, एंड आई वॉज लाइक क्राइंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. एंड देन after some times I gave a call to my husband that can you please come back soon. Then he said, what happened? He said, yeah, I said, I'm not well, can you please come? He came at his own time only. Me, despite of saying you come soon, he did not come on time. He came like somewhere around 6 p.m. only, and then I told him the whole thing. And he was utterly shocked. He said, bhai, no, he can't do, I know him from childhood and all that. Okay, I said, he मतलब मेरा husband was not believing me much. He believed क्योंकि मैं बोल रही थी तो कुछ तो होगा ही, बट उसको उसके दूर के भाई के ऊपर इतना विश्वास था कि वो, क्योंकि उसको बचपन से देखता है, तो ही वॉज नॉट एबल टू लाइक फिगर इट आउट कि हाँ इस बात को विश्वास करना चाहिए या नहीं.
फिर भी क्योंकि मैंने बोला था वो मान लिया, एंड ही सेड दैट जो भी तूने किया वो अच्छा नहीं किया, एंड देन ही स्पोक द सेम थिंग टू हिज बॉस ऑल्सो. दे फॉरगिव हिम, बट येस मेरे मन में बहुत बहुत गुस्सा था. इस बात का गुस्सा था क्योंकि मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने बिलीव किया मुझे, लेकिन उतना बिलीव नहीं किया जितना देवराज को किया. ठीक है, और वो ट्रॉमा मेरे दिमाग में बहुत था. आई यूज़ टू कर्स हिम ऑलवेज कि इट इज़ सो बैड, लाइक इफ अ वुमन इज़ शेयरिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग हर, बिकॉज शी इज़ एन आउटसाइडर, वो नया शादी हो क्या ही है, उसको इतना बिलीव नहीं करने का है. एंड द वन होम यू डोंट नो उसको बहुत अच्छे से बिलीव किया. दे अग्रीड कि हाँ, वो लोग माने कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, बट फिर भी उनके चेहरे से ये लग रहा था कि नो भाई कांट डू लाइक दिस. ओके, वो मुझे मेरे दिमाग में बहुत ट्रॉमा था. आज 19 अप्रैल है. 17 अप्रैल को राइट एट 8:30 or 9 o'clock, while I was having my dinner, my husband and my mother-in-law told that Devraj is no more. I said, why, what happened? एक्चुअली हम लास्ट ईयर ताज मेघालय, ताज असम में रुके हुए थे. ताज असम में ही वॉज देयर एज अ स्टाफ. ओके, सो आई लास्ट सॉ हिम लास्ट ईयर. Of course, I did not talk to him, but Mr. Biswas forgave him, so he had a talk to him for like 5 minutes or 7 minutes. That was the last time I saw him. And उसके बाद कल न्यूज़ आया कि he is no more. रोड एक्सीडेंट हुआ और वो ख़त्म. मतलब वो मुझसे भी छोटा ही होगा शायद 1-2 साल का. एंड ही हैड अ फैमिली, चाइल्ड एंड एवरीथिंग. मुझे सुन के बहुत बुरा लगा इसलिए क्योंकि ही हैड अ फैमिली, होल फैमिली एंड चाइल्ड एंड एवरीथिंग टू लुक आफ्टर फॉर. एंड रोड एक्सीडेंट से, आकस्मिक मृत्यु से इज़ नो मोर. और मेरे मन में एक ये भी बात आई थी कि जो प्रॉबेबली जो बद्दुआ कह लीजिए या चेड़ या आक्रोश या जो भी हो उस टाइम पे जो मेरे मन से निकला था, दैट हैज़ कम टू अ फुल सर्कल नाउ दिस टाइम. ओके, बट दैट डजंट मीन कि आई एम कर्सिंग हिम या मुझे बहुत मज़ा आया कि वो मर गया एंड ऑल दैट. नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन कार्मिक जो किसी की हाय अगर किसी को लग जाती है, सो that it takes a toll of many things, you know, that takes a toll of many things. So all I want to say is life comes back to you in a full circle when you do something bad to somebody. Okay, so मेरा यही कहना होगा कि आप किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को बुरा ना कहें, इनफैक्ट किसी को गाली भी ना दें. मैं हमेशा ही बोलती हूँ ये बात, क्योंकि abusing, accusing somehow or the other, you know, उसका एक नेगेटिव ऑरा निकलता है आपके लिए. दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को कुछ भी बुरा बोलेंगे, उसका बुरा मैनिफेस्टेशन करेंगे, कभी भी वो, या कभी आपके लिए भी बुरा, आप अपने आप के लिए भी अगर बुरा मैनिफेस्टेशन करते हैं, कभी कभी वो सच हो जाता है. क्योंकि सारा दिन में एक बार माँ सरस्वती आपके जीवा में, जीभ में आके बैठती है. सो मुझे अब भी बुरा लग रहा है. आज ही मुझे शेफ़ नितिश ने उसका ऑबिचुअरी भेजा, मुझे और ख़राब लग रहा था. बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम पे मेरे मन से जो हाय निकला था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. रीज़न वाज नोबडी वाज सो मच बिलीविंग मी देन बिलीविंग हिम. वो एक ग्रज था मेरा. दूसरी बात यह है कि आई वॉज ऑल अलोन एंड ही ग्रैब्ड मी फ्रॉम द बैक, was just not done. Okay, and I wasn't prepared for that. Okay, and I'm not such a person because I barely knew him, and even if I know him, I am not like into it. Why should I? So consent, men should always wait for the consent of a woman. Okay, if she is not comfortable, he should immediately leave her. Moreover, there was a trust issue, no, he happens to be a so-called brother for him. How could he even do that? So anyways, thank you so much for watching me and bearing me for 9 to 10 minutes long together. That was just a piece of anecdote, what happened to me, what happened in these 2 days. Just wanted to share with you, and please be very respectful to all the women out there. Okay, and stay calm and composed till her consent.